Hello and welcome to St. Andrew Institute of Technology and Management, Gurgaon. This is online lecture series and I am Rohit Raj from Civil Engineering Department. We are discussing sewage and treatment, and this is 28th lecture in this course, probably the third last lecture. Okay, and today we will discuss Imhoff tank. Okay, in previous lecture we have seen different type of secondary treatments. Okay, after that we have seen septic tanks also and their designs. Now we will start with Imhoff tanks. Okay, so this is the diagram. Okay, that is showing the uh, longitudinal cross section of an Imhoff tank. Okay, this is the cross section of Imhoff tank. Okay, so this is cross section view and this is longitudinal view. Okay, so Imhoff tank is an improvement over septic tank. Means it is a modified septic tank. The culture is anaerobic suspended culture, and the treatment culture, that is how it performs, is anaerobic suspended culture. Means it performs anaerobically and the suspended culture. Okay. In case of Imhoff tanks, the sludge is not allowed to get mixed with the digested sludge, and the outgoing effluent will not carry any undigested solid with it. Means what happens in case of Imhoff tanks, that sludge is not allowed to mix with digested sludge. Means once the treated sludge, okay, they are not allowed to mix with the coming sludge, and the outgoing effluent will not carry any undigested solid with it. Okay, means we will digest the solids before discharging them. Okay, now Imhoff tank is two storage tank in which the sedimentation is carried out in the upper storage and the digestion is carried out in the lower storage. Means it works in two compartments. Okay, first compartment, they allow to settle down the uh, suspended particles, that is sedimentation process, and in second compartment it carries the digestion work. Okay, means in the lower storage it carries the anaerobic digestion work, and in upper part the sedimentation process occurs. So this is the Imhoff tank, which is uh, different from septic tank in two or three aspects. That is, first, sludge is not allowed to get mixed, and outgoing effluent will not carry any undigested solid. Okay, means effluent will not carry any undigested solids in the case of Imhoff tank. Another point is Imhoff tank is a two storage tank. Means upper portion carries the sedimentation work and lower portion carries the digestion work, that is anaerobic digestion. Now we have another type, that is oxidation ditch. What is oxidation ditch? Basically, oxidation ditch is an extended aeration system which work in the same principle as uh, these other activated sludge processes work. Okay, means oxidation ditch has same system of working as the other activated sludge process works. Now the oxidation ditch is oval shaped long channel of about 1 meter depth. Means this is long oval shaped channel of 1 meter depth.
with rotor provided across the ditch, means they are providing rotors across the ditch so to circulate the wastewater, means there should be a proper circulation of wastewater with the help of rotors. The extended aeration produces very clear effluent with a low BOD which can be directly disposed of into a river, and the quantity of sludge produced is less because the biological solids get destroyed with the endogenous respiration. Basically, we are using secondary treatment. Our main purpose, our main uh, aim is to reduce the BOD, means will clear the organic dissolved or suspended particles. Okay, so this process has an extended aeration technique that clears BOD with an efficient rate. Okay, that leaves only low BOD that can be discharged off directly into the river stream. Now, also another thing is that the sludge produced is less as the biological solids get destroyed by the endogenous respiration, means the solids that get produced again they get respired by the organisms. So the sludge is also less and the BOD is too low. Okay, that low that it can be easily discharged into the rivers or any natural systems. हम लोग आज सेप्टिक टैंक का एक एडवांस्ड वर्जन जो कि एमहॉफ टैंक है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बेसिकली एमहॉफ टैंक सेप्टिक टैंक ही है जिसमें कुछ चेंजेस हैं. सो एमहॉफ टैंक में पहला बात ये है कि ये इम्प्रूवमेंट है सेप्टिक टैंक के ऊपर में, मतलब ये एक सेप्टिक टैंक ही है जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए. दूसरी जो पॉइंट है ये एनारोबिक सस्पेंडेड कल्चर है. ठीक है, आपको क्लासिफाई करने आ सकता है कि कौन सा अटैच ग्रोथ कल्चर है, कौन सा सस्पेंडेड ग्रोथ कल्चर है. तो अटैच ग्रोथ कल्चर जैसे आप ट्रिकलिंग फिल्टर समझ सकते हैं, और सस्पेंडेड ग्रोथ कल्चर जैसे कि आप सेप्टिक टैंक पर समझ सकते हैं, और यहाँ पे भी इमहॉफ टैंक भी सस्पेंडेड ग्रोथ कल्चर है. तीसरा जो पॉइंट है वो कि इमहॉफ टैंक में स्लज जो है डाइजेस्टेड स्लज से मिक्स नहीं होता है, जो कि एरेटेड या फिर एक्टिवेटेड प्रोसेसेस में होता है कि जो डाइजेस्टेड स्लज है वो दोबारा भी अलाउ किए जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है. और एक बात कि जो भी एफ्लुएंट हम लोग डिस्चार्ज करते हैं वो एफ्लुएंट पूरी तरह से उसमें कोई भी सॉलिड प्रेजेंट नहीं होगा, उनको हम डाइजेस्ट करके ही डिस्चार्ज करेंगे. चौथा पॉइंट जो है इमहॉफ टैंक का वो कि इमहॉफ टैंक 2 स्टोरेज टैंक होता है, मतलब इसकी जो स्टोरेज है उसे हम 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला कंपार्टमेंट का पर्पस बस सेडिमेंटेशन है, मतलब वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेटल करने के लिए अलाउ करते हैं. और दूसरा जो कंपार्टमेंट है उसका पर्पस हमारा डाइजेशन है, मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उनको कंज्यूम करना है. अब वो एनारोबिक ही होता है, आप लोग इसमें देख चुके हैं. इसके बाद एक और इम्प्रूव्ड वर्जन है हमारे पास जिसे हम ऑक्सीडेशन डिच कहते हैं. यहाँ पे एग्जांपल है, ये हमारा है इमहॉफ टैंक और ये हमारा है ऑक्सीडेशन डिच. तो इस ऑक्सीडेशन डिच की शेप आप देख सकते हैं, ये एक ओवल शेप का है. ठीक है, ओवल शेप का है, और इसमें भी जो अदर प्रोसेसेस हैं एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के वही इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें एक इम्प्रूवमेंट क्या है कि इसमें रोटर्स होता है. ठीक है, इस रोटर के वजह से एयर की सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, और अगर एयर की सर्कुलेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बीओडी एक एक्सटेंट तक रिमूव हो जाएगा, और बीओडी अगर रिमूव हो गया तो वाटर ज़्यादा क्लियर होगा. लेकिन एक और पॉइंट है कि अगर बीओडी पूरा रिमूव होगा तो स्लज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बीओडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंड प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेंगे ना. लेकिन इस ऑक्सीडेशन डिच में इसकी भी हमारे पास इम्प्रूवमेंट है
कि इसमें जो बीओडी जो बीओडी रिड्यूस होने के बाद जो सॉलिड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो स्लज प्रोड्यूस होता है, वो फिर एंडोजेनस रेस्पिरेशन के वजह से कंज्यूम हो जाता है. As the system works in an endogenous phase, no PST or sludge digestion units are required. Means uh, we don't require any primary settling tank or sludge digestion units for this system, that is oxidation ditch. Now, next is rotating biological contractors, and we have seen this. Okay, uh, in brief, we have studied in brief about the rotating biological contractors when we were studying trickling filters, that is attached growth culture. There we have briefly discussed the rotating biological contractors. Now we will completely discuss this. What is rotating biological contractors? So in this case, rotating discs are used in a medium for the growth of biomass, which is kept immersed in the wastewater up to 40% of their size. Means we will be using a rotating disc. Okay, here you can see this is your rotating biological contractors, where 40% of these rotating biological contractors, means these setup that is rotating, it's submerged into water. Means 40% of their size, they are immersed in water. Water is at this level. Unlike the trickling filters, the biomass layer moves through the wastewater in this case. Means what is the difference between trickling filter and this rotating biological contractor is that in trickling filter, biomass layer, biomass just suspend in the bottom. But in this case, biomass moves through the wastewater. Means they just keep moving through the water. Okay, here this is the biomass and they keep moving through the water. The microorganisms present in the biomass get contact with the organic matter when the disk is immersed. And the microorganism, okay, the microorganism that are present on the rotor, this is your rotating contractors. So the microorganisms that are present on this get immersed in the wastewater, means they get some immersed in this, okay, and utilizing the oxygen when the disk is exposed at the atmosphere. Means once they get immersed, they get contact with the organic matters, and when they are present, when they are at the top surface, then they utilize the oxygen. Okay, means they are in the atmosphere, so they can use the natural oxygens. So they are serving, they are having both the food and their oxygens, so they can easily consume that. So this is our rotating biological contractors working, that when they are immersed, they come in contact with the organic matters, and when they are at the top portion, then they just utilize the oxygen. Okay, over the period of the time, the thickness of biomass increases and slowing takes place to the turbulence created by the rotating disk through the wastewater. Means at the passage of time, after the passage of some time, the thickness of biomass that is present on this contractor get increases. Okay, the presence increases here, and therefore after rotating with the turbulence, they get in the water. Okay, in this method, less power is required as compared to trickling filter or ASAP.
but the BOD can be removed up to nitrate level. So this is an efficient way for the removal of BOD as it requires the less power, but the removal efficiency is quite high for this. सो हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारा जो रोटेटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है ये 40% तक सबमर्ज होता है और इसकी फंक्शन बहुत इजी है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो टॉप पोर्शन जो 60% जो ऊपर है वो एयर के कांटेक्ट में है डायरेक्टली, और नीचे का जो 40% है वो जो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट है उनके कांटेक्ट में है। तो इसके वजह से जब वो नीचे की तरफ रहेंगे तो वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे, और जब वो रोटेट होके ऊपर आ जाएंगे तब वो एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। अच्छा, इससे और क्या होगा, धीरे धीरे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ते रहेगी, और इसके बाद जैसे ही वो घूमेगा तो उसकी वजह से वो कुछ नीचे की तरफ में भी आ जाएंगे, क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तरीका जो है वो एफिशिएंट है क्योंकि ट्रिकलिंग फिल्टर से कम पावर चाहिए होती है और ट्रीटमेंट भी हमारा काफ़ी एफिशिएंट है। इसके बाद है स्किमिंग टैग हमें पढ़ना, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद नॉइज पोल्यूशन और हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट का लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। So thank you for listening. Feel free to ask any doubt. You can just contact on this number or you can mail on this mail ID. Keep post. Thank you.